Hello everyone, welcome back to our another episode on Beyond the Ranks. So today I have a very special guest with me, Muskan Agarwal. So Muskan is basically from Kanpur and she has done her B.Tech in IT from VIT वेल्लोर से. तो आज का जो हमारा एजेंडा रहने वाला है ना, तो अगर मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की बात करूं या फिर इरिस्पेक्टिव जिसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, सो इंडिया में अगर आप अर्ली ट्वेंटीज में हो या फिर इवन मिड ट्वेंटीज में भी हो और आप कॉलेज ग्रेजुएट हो और आप 40 या 50 के अराउंड आपका एनुअल सीटीसी है, सो योर पेरेंट्स वुड बी मोर देन प्राउड ऑफ यू. और उसके साथ साथ आप भी खुद को बहुत सेटिस्फाइड मानोगे और खुद को बहुत प्राउड फील कराओगे. ऐसा एक ऐसी फीलिंग आती है. बट जो आज हमारे गेस्ट है हमारे साथ, मुस्कान अग्रवाल, लाइक शी वॉज अर्निंग, लाइक उनका पैकेज जब उन्होंने अमेजोन छोड़ा, लाइक शी वर्कड विद अमेजोन फॉर ऑलमोस्ट 2 years. जब उन्होंने अमेजोन छोड़ा सो उनका पैकेज रफली अराउंड 40-45 के अराउंड था. लेकिन इतनी हाइपिंग जॉब उन्होंने अर्ली ट्वेंटीज में ही छोड़ दी अपनी. आज का जो हमारा पॉडकास्ट रहने वाला है वो उनकी जर्नी हम समझेंगे कि यार अमेजोन में जाना, इतना अच्छा पैकेज लेना हर इंजीनियर का ड्रीम रहता है और आईटी सेक्टर में तो अमेजोन लोगों की ड्रीम कंपनी रहती है. उसके बाद भी लाइक ऐसे क्या रीज़न थे जो मुस्कान ने इतना बोल्ड डिसीजन लिया और इतनी यंग एज पर, क्योंकि यार लोग अपने करियर में बहुत ज़्यादा डायलेमा में रहते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, वो क्लैरिटी नहीं आती. लेकिन गेनिंग क्लैरिटी एट अ वेरी यंग एज कि यार नहीं, मेरे को ये जॉब नहीं करनी, मेरे को अपनी खुद का कुछ काम करना है, तो वो इतना बोल्ड मूव कैसे, वो क्लैरिटी कैसे आई, वो बोल्ड मूव कैसे लिया, तो हम मुस्कान से समझेंगे. सो मुस्कान इज करंटली शी इज इनटू पर्सनल ब्रांडिंग एंड शी इज ऑल्सो इनटू सोशल मीडिया मैनेजमेंट. सो वेलकम मुस्कान ऑन आवर प्लेटफॉर्म बियॉन्ड द रैंक. सो गुड टू हैव यू. Yeah, thank you so much, Lavin, for inviting me to your podcast. I am more than happy to share my insights and share things with with your audience that probably they can take help from. More than excited for this and would love to share my journey. Do you want me to start off with? Yeah. So like you can as I have in my introduction I have told that you have done your B.Tech in IT from VIT. So apart from this, अगर आप अपने इंट्रोडक्शन में कुछ बताना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को कि आपका ऑन कैंपस प्लेसमेंट हुआ था अमेजोन में, किस पैकेज से हुआ था, और अमेजोन की कुछ जर्नी के बारे में थोड़ा सा अगर आप ब्रीफ में बता सकते हैं अपनी कॉर्पोरेट के अर्ली डेज, फिर वो कैसे आपने बोल्ड मूव लिया स्विच करने का, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. Sure, sure. So as Lavin mentioned that every engineer का dream होता है to get into like a Mang company, right? And even I had that dream as soon as I entered into college. To be honest, I did not really know much about Mang, but it was like everybody was like, oh, getting into Amazon or getting into all these companies are super difficult and it's super high package. So I was very fascinated about all of these things. And फिर like when I got into VIT, I was like, okay, what can I do now to get into these companies? Okay, so people told me that you have to do lead code and lead code say like these companies ask lead code. I was like, fine, I'll do lead code. And then I remember, so even if you will go on my lead code, you'll see there was a 3 month time span wherein I was like, my entire life purpose is to do lead code. That is it. उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है. I used to, even while I was स्लीपिंग मेरे को वो लीड कोड के सपने आते थे कि व्हाट इज दिस व्हाट इज दैट. सो सारे मेरे 2-3 मंथ्स के टाइम स्पैन में ही मैंने काफी क्वेश्चंस करे. एंड देन Amazon happened, so I applied to BNY Mellon. I got into BNY Mellon also. A lot of people do not know about that. Then I applied to Uber ka bhi I got till the final round. Uber was on campus but I could not get into Uber. And then I applied to Amazon. So Amazon, actually I applied first Amazon में apply करा था and I got the internship offer also from them. And yeah, it was off campus though. Amazon was not on campus that year. I don't think Amazon came into my campus. So I got placed, I think, so I got the offer in my late second year itself, right? Then it was like later on I had to join. So I was very happy that people around me, let's say they're still looking for jobs or something, but let's say मेरे पास already security है कुछ है. So I was like, okay, now life is sorted and Amazon ka package is like great. Like while I was doing my internship there, I was earning anywhere around a lakh, like 80,000 was the base. And उनका कुछ बोनस वगैरह मिला करके a lakh per month
for a 19-year-old, what else do you really want in life? मेरे को लगता था भाई मेरी life set है. My parents were super happy. मतलब they were like, oh wow, it's amazing. And though none of like if I have to tell you about my background, we don't come from a very, like, none of my family is in corporate, I would say. Like कोई भी नहीं था, तो उनको idea ही नहीं था कि maybe corporate में भी people can earn or something, right? Like that, right? So they were super happy, and I was also super happy. I was like, now I have to do internship and I have to give it like my everything to get a full-time offer from them. And then nothing, like my I get a full-time offer, that is fine. And that is exactly what I did. In my internship, I remember like there was not even a single day in those 2.5 months when I didn't go to office, even including Saturday Sundays. मैं रोज ऑफिस जाती थी, like 10 a.m. to like रात के 10 बजे तक. It was only work, nothing else. Because of course, like if you are a college student going to Amazon, इट इज सुपर ओवरवेलमिंग. मतलब दे लाइक इतनी सारी चीजें लाइक आपको समझनी होती है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है. तो आई वर्कड हार्ड, देन आई गॉट अ फुल टाइम ऑफर फ्रॉम देम. आई वाज लाइक व्हाट एल्स डू यू वांट इन लाइफ? नाउ नेक्स्ट ईयर आई हैव टू जॉइन Amazon. So that is how Amazon happened. But then I got exposure to a lot of different things meanwhile, because I'm a very curious person like that. Like I want to try out different things. Like if you'll go on my LinkedIn also, recently me and my brother wanted to start selling on Amazon and just see how it works and all of that, right? So we just started that. So I'm a very curious person like that. So I was like, okay, let me try this, let me try that. So I did freelancing, I did internship, like marketing internships, and I did a lot of different things. And that is how I was introduced to this like marketing kind, like side of things also. And also parallelly started posting on LinkedIn. So basically there were like thousand things going on parallelly, to be honest. It was not like one step. And then I did join Amazon, worked there for a while, because I was not sure that if I can actually, because see, it's not just about passion. Because people are like कि passion है तो छोड़ दो. No, that's the dumbest advice anybody can give you, right? You need to have the money also. Like अगर आप like you at Amazon, my salary was what, like around 1.8 lakhs per month. That's a big amount, right? And it was recurring कि मेरे को हर महीने आ रहा है, right? I was मेरा वो mental sanity है. But if I had to start my own company or I had to do freelancing, like a lot of people leave jobs like that. They're not sure कि उनको like like if they, even if they're not earning a lot, they're like okay, just because of passion they will leave it. But मेरा वही था कि if I'm able to earn as much as Amazon is giving me or even more, I will leave the job. And that is exactly what happened. And rest is history, I would say. Like there are of course a lot of things that of course we'll cover throughout this podcast. गॉट इट. सो मुस्कान यार, यहाँ पर मुझे समझना है कि उन 2 साल की जर्नी में इंक्लूडिंग और अगर मैं इंटर्नशिप पीरियड को भी Yeah. इंक्लूड करूँ, तो वो कौन सा ट्रिगर पॉइंट आया था? लाइक एज यू मेंशन कि आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे, पैशनेट थे, ठीक है, और जितना मैं समझ पाया कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल भी है. Yeah. यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन, एंड फ्रॉम लिंक्डइन एज वेल आई कुड फिगर इट आउट कि आपको मल्टीटास्किंग भी पसंद है. Yeah. तो वो कौन सा ट्रिगर पॉइंट था जहाँ पर आपको लगा कि यार नाउ आई शुड स्टार्ट समथिंग ऑफ माई ओन, ठीक है, इट्स द राइट टाइम टू लीव अ जॉब? जैसे आपने बोला 1.8 हर महीने आ रहे थे आपके अकाउंट में, वो फिक्स्ड इनकम थी, लेकिन वो कौन सा एक इवेंट हुआ, ठीक है, और वो Mhm. किस ईयर में हुआ? आई वुड लाइक टू नो, जिससे आपको एक वो लगा कि यार नहीं, अब मेरा अमेजोन से हो गया, नाउ आई शुड लीव कॉर्पोरेट. Okay. So there was no point. A very funny story actually. तो मतलब बहुत टाइम तक मैं सोचती रही कि should I leave it, should I not leave it, मतलब ऐसा वैसा. Then I saw this Jeff Bezos. I don't know how many of you guys know, but Jeff Bezos stepped down from Amazon CEO position because he said that उनको Blue Origin, like his new company, he wanted to work on that. And he actually said in one of his interviews that like I had to step down from this position for my other company, right? I cannot do both the things, I'm not doing justice. And then he also talked about this framework called the regret minimization framework, which says that let's say if I am, let's say, 80-year-old, and if I look back at my 20-year-old self, would I be happy if I would have taken this decision of leaving Amazon?
or would I regret, right? So of course, if I'm 80-year old, I would want to take the chance, because right now, see, nobody's financially dependent on me, right? Like, I just have to support myself. And like, also, so that was one. Then another was financially dependence. And third was that I was able to earn much more than what Amazon was paying me, to be honest. Like, a lot of people do not want to accept or, talk about money like that, but I'd really want to, remove that taboo from money, right? Because that, of course, it was not consistent. I would not say ki, let's say 1 year it was something, then another year also, another month also it was something. But yeah, like after like almost 1 साल तक I was also parallelly working. It was not like कि मैंने Amazon को छोड़ दिया उसके बाद चेरी मीडिया स्टार्ट हुई. No, it was like I was working parallelly to Amazon. That did mean that I had to sacrifice all my weekends. I did not have the life that most of the people had कि Friday को party कर रहे हैं, Saturday को party कर रहे हैं. No, और even रात को work life balance तो मेरा कुछ था नहीं. मेरा like, if you guys know Amazon's culture, it is like it's too hectic. If they're paying you, they make sure that you are working योर एस ऑफ. तो True. मतलब ऑलमोस्ट रात को 7-8 बजे तक काम रहता था, फिर 1 घंटे का ब्रेक, देन आई यूज टू वर्क एंड देन फिर अगेन ऑफिस, एंड देन फ्राइडे को मतलब सैटरडे संडे वाज लाइक माय ओन वर्क, राइट? तो वो सब कर करके आई केम टू अ सर्टेन पॉइंट, लाइक आई रियली बिलीव इन कंपाउंडिंग. तो आई थिंक वो छोटे छोटे एफर्ट्स compounded to something really big, that one day I was like, I have to make this decision. Because see, uh, like one of my client only who's a YC founder, he was like, Muskan, business cannot be part time. मतलब it was like I'm not doing justice to my business. I used to think यार मैं केवल इतना सा काम करके I'm able to grow to this much. So what if I give it my 24/7? What if I give it my everything, and I can take it to greater heights. I can do much better, bigger things. So that is how you can say nobody financially dependent on me. Little bit of motivation also from different things. My family was super supportive in this decision, because like somebody needs to say that you do it. I am there. You do it, right? My family friends are super supportive, and then of course, like as a company, Cherry Media, we were able to make a good amount of money, so that I do not have to worry about that aspect of it. Okay. So yeah, I feel these are the things that actually, like slowly, it was not like one point. It was like it was not a sudden decision कि मेरे को एक दिन सुबह आया कि चलो मैं छोड़ देती हूँ. I thought about it, of course. जाने में मैंने इतने पापड़ बेले थे, इतना ज्यादा मेहनत करी थी कि now to leave it, it felt like, I'm parting away with something that I really wanted at one point of time. It was like my dream. I have also written it at a lot of places. It was my dream to get into Amazon, and now leaving it, I never thought, like 18, 19-year-old Muskan would have never thought that I would be able to do it. So yeah, it was a slow decision, considered all the factors. Yeah. ग्रेट ग्रेट. तो यहाँ पर मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, जो वैल्यू एडिशन मुस्कान ने ऐड किया अपने इस आंसर में, वो यही था कि कंपाउंडिंग. जैसा आपने बहुत सारे सोशल मीडिया पर कंपाउंडिंग वाला जो हम अपना फाइनेंसेस मैनेज करते हैं, ठीक है, हमें पैसा जो इन्वेस्टमेंट होती है उसमें भी कंपाउंडिंग रूल लगता है. तो ये मेरे लिए भी एक बहुत न्यू लर्निंग है, ठीक है, मुस्कान से जो उन्होंने बताया कि वो कंपाउंडिंग था, वो छोटे छोटे एफर्ट्स थे जो उन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए, ठीक है, पार्टीज वगैरह को सेक्रीफाइस किया, ऑफिस के बाद आके अपने खुद की ड्रीम पर काम किया, फिर वीकेंड्स पर काम किया. वो सारे सेक्रीफाइसेस जो उन्होंने किए एक यंग एज पर, उसी का फल था कि शी वाज एबल टू, वो कंपाउंड इफेक्ट बताया उन्होंने, छोटा छोटा करके इट ऑल पाइल्ड अप, और वन डे शी वाज एबल टू स्टार्ट समथिंग ऑफ हर ओन. सो मुस्कान, जैसा आपने बताया कि आपकी फैमिली भी बहुत सुपर सपोर्टिव थी इसमें, लाइक, और आपने ये भी बताया कि यू वर एबल टू अर्न उससे ज़्यादा जितना, और वो कंसिस्टेंट नहीं था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कंसिस्टेंटली 1.5 या 2 की सैलरी आ रही थी, यहाँ पर कंसिस्टेंट अमाउंट नहीं आ रहा था. लेकिन यहाँ पर मुझे ये चीज़ समझनी है आपसे कि तो आपने जो खुद का स्टार्ट किया चेरी मीडिया, इस पर भी मैं आऊँगा, इसके बारे में क्या विजन है, क्या इसका पर्पस है, थोड़ा सा इन डेप्थ में समझेंगे. लेकिन उससे पहले, ये आपने अपनी खुद की सेविंग से स्टार्ट किया या फिर फैमिली ने भी इसमें आपको सपोर्ट किया बैक एंड पर? और इसके बाद कि अगर हम ये समझ पाए कि क्या कभी कोई जब से आपने अमेजोन छोड़ा है, तो क्या इन सालों में कभी आपको रिग्रेट फील हुआ है, और या फिर कभी वो बिजनेस फाइनेंशियल, क्योंकि एज यू टोल्ड मी दैट आपकी 12 लोगों की टीम है,
तो Mm-hmm. कभी वो ऐसा हुआ हो कि यार फाइनेंसेस इतने मीट ना कर पाए हो, तो कभी आपको रिग्रेट फील हुआ हो कि यार अब मैं कैसे फाइनेंसेस मैनेज करूंगी, और इतना बिजनेस ग्रो ना कर पाए हो, तो उन सब चीज़ों को आप कैसे मैनेज करते हो, कैसे टैकल करते हो? Got it. So coming to the first question, that if so this Cherry Media is a service based business, right? So it's like I'll just give a like one liner about what we do is like we help founders with personal branding, and let's say there are brands, so we help them with marketing campaigns or social media management of their pages. So it was never like like I asked, मतलब service based business में it is never like कि you need a lot of investment. To be honest, like it's a easy business to get into, but it's a super difficult business to sustain, right? तो अगर आज आप देखोगे everybody, मतलब LinkedIn पे so many people are like personal branding strategist or social media marketer. It's super easy. कुछ पैसे नहीं लगते हैं. You just have to write all like that, right? So of course initial investment was not something कि हमें inventory लानी थी, कुछ बनाना था, वो जरूरत नहीं था, तो neither did I ask. And it was always like कि like पहले मैंने start off करा था with a freelancer. So for a good amount of time, for 4 years I did freelancing, जिसमें like I started off with like charging almost, I think, one fourth of or one fifth of what we charge right now. And then slowly this happened. And second question that you asked was, do I regret leaving Amazon? Absolutely no. Absolutely no. Like, I think that was the best decision that I made, because now I am able to do so many things. For example, like I'm able to like our revenue, to be honest, have scaled to like 5x after I had left, because I could give so much of time, right? Because when you're in a job, you have like you also have to do the work there, and then you're like, oh, ye bhi karna hai, wo bhi karna hai, ye bhi karna hai, wo bhi karna hai, right? But now I can only focus on my own company, right? And I would not say that the revenue is always constant. For example, let's say in June or July, our revenue did dip, but then in November, December, मतलब ये जो लास्ट के 3-4 महीने हुए हैं, our revenue, like basically it just made up for the dipped revenue, right? So any entrepreneur you will ask, they will never say कि उनका धंधा हमेशा like अच्छा ही चल रहा है. वो कभी होता ही नहीं है, right? It is always like this, like this, like this. So that is what कि मतलब या तो मैं job करके I could choose this path, और business करके I could choose like this path, or wherein the highs are really high, but the lows are also really low. But definitely I never regret the decision. I think that was the best decision to that I have ever taken. कूल कूल। सो जैसे मुस्कान, अभी आपने बताया कि लिंक्डइन पर या सोशल मीडिया पे ये डाल देना कि पर्सनल ब्रांड स्पेशलिस्ट या स्ट्रेटेजिस्ट, ये बहुत इजी है, ठीक है, और इतना ज़्यादा इन्वेंट्री या फिर इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती है इसे स्टार्ट करने में। तो यहाँ पर मुझे ये समझना है आपसे कि सोशल, आज चाहे कोई भी छोटी कंपनी हो, बड़े प्लेयर हो, या कोई भी ब्रांड हो, या फिर इवन अ पर्सनल ब्रांड भी है, अगर किसी कोई एक अगर खुद का एक इंडिविजुअल भी है, तो वो खुद को स्टैंड आउट कराने के लिए सोशल मीडिया का पूरा सहारा लेता ही लेता है, ठीक है। Mhm. कोई भी बिजनेस आज की डेट में इतना बड़ा हो ही नहीं सकता बिना सोशल मीडिया का सहारा लिए, ठीक है। Yeah. तो मुझे यहाँ पर ये समझना है आपसे कि बीइंग इनटू दिस सोशल मीडिया मैनेजमेंट और बीइंग इनटू द पर्सनल ब्रांडिंग स्टफ, तो आप कैसे, क्योंकि मार्केट में और भी बड़े प्लेयर हैं, ठीक है, जो बहुत टाइम से हैं, ठीक है, और बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज भी हैं, मार्केटिंग एजेंसीज हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं, तो आप कैसे डिफरेंशिएट कर पाते हो? मतलब इफ आई यूज अ वर्ड, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है मार्केट में, तो Mhm. आप कैसे इतने कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में सर्वाइव कर रहे हो, और कैसे आप स्टैंड आउट करा पाते हो अपने आप को, अपने जो आपके क्लाइंट्स हैं उनको Mhm. आप कैसे 7 स्टार एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते हो? Yeah. So I think I have a philosophy on this. Keep when we say competition, right? There are, if let's say 100 is the entire bucket, 99% people are doing the average stuff. मतलब वो average काम करते हैं. But if you will go at the top, like if you really give premium services, there aren't a lot of people who give premium services, and they aren't even charging that much, right? Because कम charge करके ज़्यादा clients को लेना और average काम देना is much more easy, right? So अगर आप average काम करोगे, of course there's a lot of competition because a lot of people are doing average work. But to be honest, like at Cherry Media, we've like मैंने ये चीज फर्स्ट डे से करी थी that we will not take 10 clients, we'll take only 5 clients,
but the kind of work that we'll give to them would be that premium कि वो 10 लोगों को जाके बताएंगे, and that is what they do. Like so many people, so many referrals we get at our company कि अभी हमारा outbound बहुत कम हो गया है, मतलब it's like referrals या inbound आ जाता है हमारा, तो मतलब रेफरल्स का कन्वर्जन भी बहुत ईजी होता है, राइट? सो आई वोंट से कि अगर आप प्रीमियम क्वालिटी का काम दे रहे हो, देयर इजंट एक्चुअली अ लॉट ऑफ कंपटीशन, एंड दैट इज ऑल्सो वेयर यू कैन मेक मनी, राइट? मतलब अगर आप मतलब if you are doing that quality of work now, trust me, people would be ready to pay you a lot more than anybody else. तो आपका टारगेटिंग भी बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल नाउ वी whenever we get on a call or something, we understand that is this company, let's say हमारे एक revenue marks है कि let's say is your company making this much, is your company making this much, right? So that is something. So not saying that you should not work with smaller companies or something, but that is something that we did so that हमारा भी like we can also scale and we can also give quality service, because quality service comes at a price also, right? We need to have account managers, premium designers, premium video editors, motion graphic designers, everything. So yeah, I think that has really helped us, मतलब कि working with premium clients, and I think giving premium service is something that is differentiating us apart from so many other people who are there. Yeah. गॉट इट, गॉट इट. सो यहाँ पर ना मेरे को बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन लगा कि भले आप अपने 5 क्लाइंट लो, 5 क्लाइंट्स को कैटर करो, लेकिन उनको उनका एक्सपीरियंस बेटर करने पे ध्यान दो, रादर देन आप 100 क्लाइंट पकड़ रहे हो, 100 में से बस 2-4 का काम अच्छा कर रहे हो. तो ये काफ़ी काफ़ी अच्छी फिलोसफी कह सकते हो आप, बिजनेस की समझ कह सकते हो, जो कि मुस्कान Hmm. ने अभी कन्वे की. सो मुस्कान, मूविंग ऑन, कि यहाँ पर ना मुझे लेमन टर्म्स में समझना है आपसे, क्योंकि बिकॉज ये मेरा डोमेन नहीं है, मेरी एक्सपर्टीज नहीं है. सो एज अ आउटसाइडर आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि ये जो आपका डोमेन है, पर्सनल ब्रांडिंग एंड स्टफ, ये डिजिटल मार्केटिंग से कैसे अलग है? Got it. So I'll tell you what personal branding is exactly, why is it important, and also how did I even start, right? So started off with LinkedIn, like just like that. Like there was no intention to become like a personal branding company or start freelancing around that. I just started posting on LinkedIn like that. So a couple of my posts went viral, and then like I was like, okay, let me continue posting, because even though today like I do podcasts like these or post on Instagram, but I'm not a person who is very camera friendly. Like I'm still a very big introvert. So I was like, what better than just writing, right? I can write down my thoughts, and I do not even have to come in front of the camera. So that is what I started, and then slowly and gradually, as I told you, right, compounding. I did not even know that my LinkedIn grew to a stage that now people started reaching out to me. So I got a couple of inbound leads that, hey, like, can you write for me on LinkedIn and everything? I was like, sure, why not? I did not know how much to charge or what to charge, anything, right? So I just quoted them a random number, and then I was like, okay, wow, I love writing. Like that is when I discovered that I really, really loved writing. Like even if at 3 a.m. you ask me to Muskan write something, I would be like, sure, right? And I can write in a way, because capturing people's attention is very difficult. Now videos may be difficult, hai, so nobody really wants to read and all of it, right? So I was really good at that, and that is how I understood that people actually want to get active on LinkedIn. So that is how now personal branding came into picture, that all these founders, right, let's say any founder that you take, like especially B2B founders, LinkedIn has most of the decision makers. So LinkedIn has published these stats also, ki like 70% of the decision makers are like active on LinkedIn or present on LinkedIn. There are a lot of stats. I'll send you that link that you can attach in the description. So decision makers are there, investors are there. If you are a B2B company, your customers are there. If you want to hire people, people are there, right? So why wouldn't a person want to be like known on LinkedIn? And if you, let's say, have like a 40K 50K following, or if you are known in the community, all of these things get really easy, right? So many of my clients, right, like their hiring is mostly from LinkedIn. So LinkedIn has this paid thing also, that you can promote a job. It's super expensive, but if you do personal branding on the other hand, you can get so many applicants just because you have like have been posting. And by personal branding, I don't really mean posting anything on LinkedIn, right? So let's take an example. So let's take my example. So if I am
I am the founder of Cherry Media, which is a personal branding agency, and I want to be known as an entrepreneur, right? I will post thought leadership content around this, then maybe some of my personal stories and some of my customer success stories, right? So you need to see that, let's say you have your target audience. So my target audience is, let's say, other founders. So what would they want to see? They want to see what are the results that I have gotten. So I'll post the results. If there are some other people in my same age, they would want to know about my journey. How did I even do this? I'll write about that. If, like, apart from that, I write about my company, how are we growing. Like, if you want to hire new people, you want to write about how are you, treating your current hires, right? How is your team growing and all of it, so that other people would be interested in joining your team, right? So you decide that what is your target audience, and then based on that you start writing content on a LinkedIn. And then we discovered that founders don't really have the time, right? They're busy building their business. Like, they will not come and write every day on LinkedIn, right? So that was one market gap that was there, wherein I have, till now, I think I've talked to more than like 500, 600 plus founders. They're like, they don't have the time to do this, right? मतलब लिखने का time नहीं है. So that is where we come in, and personal branding basically as a service happened. And yeah. So, I got a very good idea about this personal branding. And so, Muskan, how is this different when compared to the digital marketing stuff? Okay, so digital marketing is like a very big subset, right? Digital marketing के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है, right? And let's say digital marketing is more for like a brand. This is when you are growing a personal profile, right? This is not for a brand's profile, right? Digital marketing के अंदर, let's say, social media management, for example, you're doing again for a brand. Hmm. You're doing performance marketing again for a brand. Here is when you are doing it for a personal profile. So I would not say that it is totally different. It is a subset of digital marketing. It Got is it. not like कि ये अलग है, personal branding एकदम अलग है. It comes under that, basically a digital footprint, right? You have different things to do that. This is just like one add-on to having a digital footprint of that company. And all the founders also, they don't want to be like influencers or something. They are doing it for their company, right? मतलब this is just a faster way to get known. Because see, if you are putting out content on your brand page, no, like, you will trust me probably more than you will trust Cherry Media, right? So जब भी कंपनी न्यू होती है, तो दे आर लाइक कि people trust people, like a human will trust a human, right? So that is where it is very important that the founder should also be known more than the company. Founder also talks about the company only, like, how, जैसे मैंने बताया, at Cherry Media we talk about कि हमारे client testimonials, हम कैसे grow कर रहे हैं, हमारी team क्या है. Similar thing we do it for founders also, based on what, of course, their result or target audience is. Got it, got it. So Muskan, जैसा कि इस पॉडकास्ट में आने से पहले I was doing my homework and sort Mhm. of research on LinkedIn and on YouTube and on Insta as well. Yeah. So मैंने एक पैटर्न नोटिस किया कि जितना पॉजिटिव साइड है इस पूरे डोमेन की, पर्सनल ब्रांडिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग की, उतनी ही नेगेटिव साइड भी है, जिसे हम Mhm. डार्क रियलिटी कह सकते हैं. जैसे ब्राइटर साइड आप बता रहे हो, डार्कर साइड ये भी है. तो आई हैव सीन कि यार बहुत ज़्यादा ये थॉट्स भी आते हैं कि ये जो एजेंसीज रन हो रही है ना, दे आर लूटिंग देयर क्लाइंट्स. ठीक Mhm. है, कि दे आर लाइक मार्केट, जो एक अच्छा नोशन वो होता है कि अंडर अंडर कमिट एंड ओवर डिलीवर. लेकिन Yeah. इसमें उल्टा हो रहा है, ये दे आर डिलीवरिंग लेस देन कमिटिंग. तो जितना वो Yeah. कमिट करते हैं उससे कम ही डिलीवर करते हैं. तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस कि यार ये नोशन ठीक है या मार्केट में ऐसी चीज हो रही है? और इसके अलावा कि अगर मैं आपकी भी जर्नी की बात करूं, ये इसका कंटिन्यूएशन है इसी क्वेश्चन की, तो इसमें आपके क्या लेसन्स आपने सीखे हैं, और क्या क्या मेजर हर्डल्स हैं जो आप अपने डे टू डे एक्टिविटीज में फेस करते हो, और उन हर्डल से आप कैसे हाउ यू आर रेक्टिफाइंग दोज हर्डल्स, और आप उनसे क्या लेसन्स लर्न कर रहे हो? Got it. So if you talk about agencies, right? So yes, agencies are, like, I think, infamous, like, agency culture, and a lot of times when people call, like, I'm like, don't call us an agency, but at the end of the day, we are an agency, right? So it is infamous, and I think that is where the people, I think the companies or the founders should do their research. To be honest, what we do from our end is we tell them our case studies.
you tell them what are the results that you have gotten, right? So that people can trust you. Because mostly what happens is, let's say if a person is charging X for similar kind of deliverables, another agency is charging let's say 5x. So client is like, ये X में सस्ते में काम करके दे रहा है, इसी को हायर कर लेते हैं। फिर 3-4 महीने काम कर लेते हैं उनके साथ, फिर पता चलता है अरे ये तो रिजल्ट ही नहीं ला पा रहे, तो उनका x into 3, 3 महीने 3x पैसे बर्बाद हो गए। देन वो 5x वाले के पास जाते हैं, एंड देन they give them the results, right? So here is where I think people make mistake of hiring people if they are giving the services for to them for cheap, right? Because you need to understand, it's no, like, as I told you, good service or great service comes at a price also. मतलब आपको best चाहिए, पर आपको you don't have to spend that much, वो नहीं होता है, right? So that is where I think clients get a little bit of मतलब थोड़ा सा वो, अगर कोई कम प्राइस में कुछ करके दे रहा होता है तो दे लाइक उन्हीं से करवा लेते हैं। बट मेरे पास काफी सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं दैट मुस्कान वी हैव हैड बैड एक्सपीरियंस विद एजेंसीज। वो हमें इतने का करके दे रहा था, बट देन उन्होंने कुछ भी, लाइक दे वर नॉट एबल टू डिलीवर रिजल्ट्स। देन व्हाट्स द पॉइंट, राइट? इफ लेट्स से यू आर गिविंग एक्स ऑल्सो इंस्टेड ऑफ 5x बट रिजल्ट्स आपके जीरो हैं, then what's the point? You are at the end of the day wasting money by working True. with them for like 3 months, 5 months, right? Instead you work with a person who is charging a little bit higher but giving you a premium service and is giving you, मतलब वो 5 महीने के रिजल्ट्स वो आपको 1 महीने में ला के दे रहा है। यू कैन डू द मैथ। अगर आप एक अच्छे बंदे के पास जाओगे, वो आपके लिए एक बेटर इन्वेस्टमेंट होगा, राइट? एंड लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग में वी अंडरस्टूड दिस वन थिंग कि मतलब, एज आई टोल्ड यू पहले भी, कि हमारे प्राइसेस भी अच्छे खासे होंगे, बट हमारी सर्विस इतनी अच्छी होगी, लाइक दिस इज वन थिंग दैट आई एक्चुअली बिलीव विच इज टोटली ऑपोजिट, अंडर प्रोमिस एंड ओवर डिलीवर। कि हमारे साथ ऐसा नहीं होता है कि हमने बोल दिया 10 पोस्ट करके देंगे, 10 पोस्ट करके दे दिया। ऑल द क्लाइंट्स दैट वी हैव, we make sure कि if they are paying us whatever amount, are they able to make 3x or 5x in terms of money revenue, if they're hiring people, मतलब उनको ROI आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट? बिकॉज एजेंसी इंडस्ट्री में एटरेशन रेट इज सुपर हाई। मतलब क्लाइंट्स ले तो आते हैं वो 50, लेकिन उनको रिटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। True. हम लोगों ने ये, लाइक आर क्लाइंट सर्विसिंग और आर क्लाइंट रिटेंशन इज वेरी स्ट्रांग। मतलब नन ऑफ आर क्लाइंट हैव लेफ्ट अस, मतलब ऐसे, मतलब ऐसा नहीं बोलूंगी कि कोई क्लाइंट छोड़ते ही नहीं है, बट द रेट इज लाइक वेरी वेरी लो। So that is something that has really helped us. But yeah, unfortunately, I wouldn't deny that so many of the agencies now are, like over promising, under delivering. So that is where you should do the due research, see their digital footprint, probably look at their testimonials, if possible talk to the people जिनके साथ उन्होंने काम करा है। uh, yeah, I mean, that is that these are a couple of things. Apart from that, if I don't know if a lot of people would do that, but also you can do like a 1 month contract, that कि instead of going ahead with like a 6 month or 7 month contract, आप 1 महीने का contract करके देखो उनके साथ, if it works well, or you can just offer them कि ये मैंने starting में actually करा था, that when we did not have that many testimonials, we used to offer them कि we'll do this thing at a 50% discount in for the first month. If you like it, we will continue at like a higher price. So this is probably something that I'm talking in terms of clients, कि clients को कैसे एक अच्छा agency they can choose. This is what they can tell them कि यार हमारे साथ but like you work at a 50% price for the first month. If we actually like it, हम आपके साथ आगे like same price पे we can continue. Yeah. Got it, got it. So मुस्कान, मूविंग ऑन टू आवर अनदर एस्पेक्ट, मुझे यहाँ पर ये समझना है अब ना, मैं थोड़ा सा जो मेरे नेक्स्ट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, कपल ऑफ एस्पेक्ट जो हमारे रहते हैं अभी, वो थोड़े स्टूडेंट्स ड्रिवन रहेंगे, लाइक Sure. द स्टूडेंट्स हु आर करंटली इन देयर इन देयर कॉलेज, करंटली परसुइंग देयर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो जितनी पर्सनल ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग है या सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, इसमें जितना मैं समझ पा रहा था, इसमें यू नीड नॉट टू हैव अ पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ कि यार आईआईटी का टैग चाहिए, एनआईटी का टैग चाहिए, लेट्स से जैसे अमेजोन में जाना है तो यार ठीक है, इंजीनियरिंग होनी चाहिए या कोडिंग आनी चाहिए, ठीक है, लेट्स से। Yeah. तो इसमें कोई भी स्टूडेंट, लेट्स से अगर मैं लाइफ साइंसेस का हूँ तो मैं भी पर्सनल ब्रांडिंग में आ सकता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग सीख सकता हूँ। तो मुझे आपकी जर्नी से समझना है, और क्या आप कॉलेज ग्रेजुएट्स को ये टिप्स देना चाहते हैं, और उन वर्किंग प्रोफेशनल्स को आप क्या सजेशंस देना चाहते हैं, दोज हु आर स्ट्रगलिंग इन देयर करंट जॉब, ठीक है, और दे वांट टू मेक अ स्विच, या फिर उन्हें अपना खुद की
एजेंसी स्टार्ट करनी है, तो यार क्या, कहाँ से वो सीखें? क्योंकि यार सोशल मीडिया पे ना बहुत सारा है, तो बहुत सारी नॉलेज है, हम्म। कुछ पॉजिटिव्स भी है, नेगेटिव्स भी हैं। सो देयर इज अ कोटेशन लाइक टू मैनी कुक स्पॉइल द फूड। तो इतना ज्यादा डंप यार्ड कह सकते हो आप, इतनी नॉलेज का भंडार है, तो बंदा ना कंफ्यूज हो जाता है। अगर मुझ जैसा बंदा है ना, अगर मुझे कुछ समझना है, तो कोई वन स्टेप सॉल्यूशन है कि यार अगर मैं ये इंटर्नशिप कर लूँ, लेट से ये कोर्स कर लूँ, पेड अनपेड जो भी है आपको, मतलब थोड़ा सा मुझे इसे करियर रोड मैप की तरह ब्रेक डाउन करके समझाइए। Okay, so let's say if there's a 19-20 year old जिसने कॉलेज ज्वाइन करा है और he or she wants to do different things. I am a firm believer of execution. मतलब मेरे से कभी ऐसा नहीं होता है कि like I'm learning because as you mentioned there are thousands of lakhs of things available on the internet. I am a big believer of internships. तो इसीलिए मैंने भी मतलब फर्स्ट ईयर से मैंने इंटर्नशिप करना स्टार्ट कर दिया था कि यार मतलब कुछ भी कर लो, मतलब गिव मी एनीथिंग, मतलब मैं कुछ भी लाइक इवन इफ देयर वाज अ सम कुछ एक्सेल का उनको चाहिए था, आई यूज्ड टू लर्न इट एंड इम्प्लीमेंट. आई वुड हाईली रेकमेंड एवरीबडी टू बी एन एग्जीक्यूटर rather than just a learner. मतलब learn execute rather than learn and then at some point आप execute करोगे. वो if you want to learn fast, I think this is something that you can do. And what was your other question? Sorry, I. या सो ये तो आपने बताया कि ऑन मतलब लर्निंग वाले पार्ट पर आपने बताया, एग्जीक्यूशन वाले पार्ट पर, लेकिन कोई ऐसा कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन एज इन कि यार रोड मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यार लेट से आप यूट्यूब पर जाके, कोर्सेरा पर जाके, या फिर अगर किसी बंदे को, लेट से मैं लाइफ साइंसेस का हूँ, स्टूडेंट हूँ, मैं बीएससी कर रहा हूँ या बीटेक कर रहा हूँ, थर्ड ईयर में हूँ या फोर्थ ईयर में हूँ, सो अपार्ट फ्रॉम माई कॉलेज, मैं शाम को फ्री हो गया कॉलेज के बाद, अब मुझे कुछ इंटर्नशिप करनी है या फ्रीलांसिंग करनी है, तो मैं कैसे इसमें अपना करियर एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट कर सकता हूँ? तो मुझे वो कोर्स क्या मिलेगा, कोई बुक पढ़नी पड़ेगी, कोई इंटर्नशिप कैसे, या रीच आउट करना है लोगों को, तो उस वे में समझना चाह रहा था मैं। Okay, okay, good question. So let's say what you can start off with is, let's say you want to become a, let's say you're in BTech and you want to do, let's keep it as marketing only, that you want to become a social media manager, for example, for brands जिनका budget बहुत ज़्यादा high नहीं है, तो let's say वो agencies को afford नहीं कर पा रहे, but their budget is like 15-20 हजार, which is also good for you in if you're in a college and everything, right? What you can do is start building your personal brand, because it has worked for me and it is working for so many other people. By building your personal brand, I don't mean to say like start writing something, start making a lot of videos on Instagram and everything. Start posting a little bit on LinkedIn about what you have done, because see बिना portfolio के और without even a single proof of work, nobody will want to hire you. ठीक है? So this is चलो the freelancing part, or something easy. I'll tell you what you can do is start looking for internships. To be honest, there are a ton of internship. If there is somebody saying कि उनको internship नहीं मिल रही 5,000 की, I don't agree to that. There are so many startups जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, बट उनके पास सिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं. मतलब मेरे साथ भी यही हुआ था. मैंने येलो क्लास में इंटर्नशिप करी थी. आई लर्न सो मच फ्रॉम दैट. उन्होंने भले मुझे पैसे बहुत कम दिए थे, बट मुझे सीखने को बहुत ज़्यादा मिला था. तो इन द स्टार्ट योर फोकस इज कि मैं कितना मैं सीख सकता हूँ कितना, राइट? तो मैंने ये रील भी बनाई थी कि डोंट गो फॉर इंटर्नशिप स्कैम्स, अनपेड इंटर्नशिप. तो पहली बात तो अगर कोई बहुत अच्छी कंपनी है वो आपको कभी अनपेड इंटर्नशिप ऑफर नहीं करेगी, वो हमेशा आपको एक पेड इंटर्नशिप भी ऑफर करेगी. बट यू हैव टू मेक दैट वाइज डिसीजन कि अच्छा ठीक है, चलो ये कंपनी मुझे पैसे नहीं दे रही है फॉर एग्जाम्पल, बट इज दिस कंपनी टीचिंग मी समथिंग? अगर वो आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करने में हेल्प कर रही है, गो अहेड एंड डू इट. अगर वो आपको लेट्स से 5,000 रुपए भी दे रही है, पर वो आपको सिखा रही है बहुत सारी चीजें, आप इंटर्नशाला पे जाओ. उसमें आपको जो भी, जैसे लेट्स से आपको सोशल मीडिया मैनेजर बनना है, देयर इज अ फिल्टर. अब उसमें सोशल मीडिया मैनेजर डालो, हजारों कंपनीज आ जाएंगी यार. आपको एक रेज्यूमे बनाना है, उसमें वो सब में अपलोड कर दो. ठीक है, मतलब मैं तो आग बन करके सब में अपलोड कर देती थी. 100 में अप्लाई करा, दो का तो 10-12 का रिप्लाई आएगा, दो के साथ कॉल पे जाओगे, एक का तो हो ही जाएगा. ठीक है, मतलब इसमें ना, लेकिन आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको बहुत ज्यादा वो लोग पैसे वैसे दे रहे हैं, ये नहीं मिलेगा. मतलब स्टार्टिंग में इट्स लाइक आपको बस सीखना है. आपको ये नहीं देखना है कि यार ये क्या है, टीम कल्चर क्या है, ये वो नहीं.
आपका पर्पस होना चाहिए भाई मेरे को जो भी काम दे दे, बिकॉज सी अगर वो एक स्टार्टअप रन कर रहे हैं वो आपसे तो थोड़ा सा ज्यादा ही कर रहे हैं ना, मतलब वो हो सकता है कॉलेज के बाद मतलब उन्होंने स्टार्ट करा है राइट, तो आपके पास होगा उनसे कुछ सीखने के लिए. So that is one way. Apart from that, Fiverr and Upwork has never worked for me. I will not suggest कि जो भी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो उस पर जाएं और अपना टाइम भी बर्बाद करें. फेसबुक ग्रुप्स भी मैंने कभी ट्राई नहीं करा. अ लॉट ऑफ पीपल जिनके लिए वर्क करा है कि फेसबुक ग्रुप्स पे आप लोगों को रीच आउट करो कि यार मैं ये कर सकता हूँ आपके लिए. लिंक्डइन हैज वर्क द बेस्ट फॉर मी. आप ऐसे आप फिल्टर डाउन करो कि यार ये नई कंपनीज हैं, या फिर मतलब आपको इजीली मिल जाएगा यार कि मतलब लिंक्डइन पे व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट सर्च फाउंडर एंड देन प्रोबेबली आप और फाउंडर एंड हायरिंग. फॉर एग्जांपल मैंने लिंक्डइन बुलियन के बारे में बात करी है, तो लिंक्डइन बुलियन प्रॉब्ली आई कैन जस्ट टेल मतलब मैं उसका लिंक डाल दूंगी कि व्हाट इट इज, बट उससे आपको बेसिकली सारे फाउंडर्स मिल जाएंगे जो हायर कर रहे हैं, ठीक है. तो आप देख लो कि उनको रीच आउट कर दो, हे आई एम दिस आई हैव मैनेज्ड अ सोशल मीडिया पेज, और अगर आपने किसी के साथ काम कर रखा है तो आई वुड लव टू डू समथिंग फॉर यू गाइज ऑल्सो, एंड आउटरीच करना स्टार्ट कर दो, ठीक है. And then there are high chances that people would reply to you and start reaching out to people जिनकी कंपनी बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी बड़ी है तो पहली बात तो वो बहुत स्किल्ड लोगों को देख रहे हैं, वो आपसे काम नहीं करवाएंगे, और चांसेस है कि वो आपका मैसेज देखे भी ना, क्योंकि उनको ऑलरेडी इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं. गो फॉर वेरी स्मॉल कंपनीज, मतलब जो अभी एकदम नई नई कंपनीज है, मे बी बूटस्ट्रैप्ड कंपनीज और समथिंग लाइक दैट. उनको रीच आउट करो, स्टार्ट वर्किंग फॉर देम, दैट्स इट. दिस इज हाउ इट हैज वर्क द बेस्ट फॉर मी. लर्न, इम्प्लीमेंट, और अगर वो कुछ बोले कि भाई ये करना है, नहीं आता है, सीख लो यार, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है. एंड टू बी ऑनेस्ट मतलब आई नो एज यू मेंशन कि देर आर थाउजेंड थिंग्स देयर, बट लाइक डोंट लुक एट थाउजेंड वीडियोज. अगर एक भी वीडियो देखोगे ना, मतलब देख लो कि किसमें अच्छे खासे व्यूज हैं. मैं तो यही करती थी, जिसमें भी अच्छे खासे व्यूज हैं मैं उसको एक सोर्स ऑफ ट्रूथ बना लेती थी, एंड देन आई यूज टू जस्ट वॉच इट एंड लर्न इट, राइट. बिकॉज टू बी ऑनेस्ट वो नॉलेज सेम ही दे रहे हैं, जस्ट अ डिफरेंट वे टू टेल इट, राइट. So that is how I have मतलब learned. I would not be able to recommend a course unfortunately because मैंने कभी कोई कोर्स फॉलो नहीं करा है. I was always कि जो भी चीज़ नहीं आई सीख लो और फिर इम्प्लीमेंट कर दो. गॉट इट, गॉट इट. सो यहाँ पर जो मेरे को सबसे अच्छी बात लगी मुस्कान की जर्नी में, वो यही है कि यार यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. आपको Yeah. छोटे से स्टार्ट करना पड़ेगा. डोंट गो और डोंट रन आफ्टर द बिग बिग नेम्स, बिग ब्रांड्स, ठीक है, क्योंकि वो आपको यार उनके पास तो लाखों लोग हैं ना, हज़ारों लोग हैं, ये भीड़ बहुत गलती लंबी है. एक्चुअली मैंने करी थी स्टार्ट में, दैट इज हाउ आई हैव लर्नड इट. कि मतलब मैं सोच रही थी यार मेरे पास बिना कुछ के आई कैन चार्ज अ वेरी हाई अमाउंट एंड आई कैन ऑल्सो गो टू वेरी बिग कंपनी. स्टार्ट में सबने ना बोल दिया यार, मतलब आई गॉट इनटू लाइक अ लॉट ऑफ सेल्स कॉल्स, काफी लोगों ने रिप्लाई भी करा, बट मेरे पास कुछ था ही नहीं दिखाने के लिए कि मैंने काम क्या करके रखा है, राइट. एंड नाउ आई एम एक्चुअली वर्किंग विद लाइक टू 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 थ्री क्लाइंट्स हैं हमारे, जिनको मैंने पहले रीच आउट करा था, उन्होंने हमें मना कर दिया था बिकॉज हमारे पास टेस्टिमोनियल्स या कुछ भी नहीं था, केस स्टडीज नहीं थी, राइट. तो डोंट गो फॉर वेरी बिग कंपनीज, लाइक छोटी कंपनीज के पास गॉट जाओ, इट, या. गॉट इट. और मतलब स्टार्टिंग में लोगों को अगर आप बहुत ही करियर के अर्ली डेज में हो तो आपको लर्निंग पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए रादर देन अर्निंग. अगर आप लर्निंग सेंट्रिक बनोगे ना, तो अर्निंग ऑटोमेटिकली ओवर द ईयर्स आपके पास आ ही जाएगी. सो यार मुस्कान, मूविंग ऑन टू अनदर एस्पेक्ट, वो मेरे को ये समझना था कि जो आपकी एजेंसी है चेरी मीडिया, ठीक है, तो यार इसका काम क्या रहता है, ठीक है, और किस क्या आपका अगर मैं लॉन्ग टर्म, जैसे जो भी बिजनेस होता है या फिर कोई भी स्टार्टअप होता है, उसका एक वो एक पर्पस सॉल्व कर रहे होते हैं और उनका एक बड़ा सा मिशन होता है कि यार हम इस मिशन पर हैं, ठीक है, या फिर ये हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, या फिर ये इस चीज सोसाइटी को इस वे में हम बेटर कर रहे हैं. तो आपका ये जो खुद आपकी एजेंसी है जिसमें भी 12 लोग काम कर रहे हैं, तो आप क्या पर्पस सॉल्व कर रहे हैं और क्या आपका विजन है, और इसके बाद फिर हम लास्ट एस्पेक्ट पर कवर करेंगे, एंड आई बिलीव वी आर देन गुड टू रैप इट अप. Got it. So, Cherry Media, which you mentioned, is a personal branding agency. So currently, we are working with 60 plus founders all across the globe, whether India, US, UK, Canada, Singapore, and we are helping them with this one sole purpose of how they can actually grow on LinkedIn. And we want to be their growth partners, not a content creation partner. This is one agenda that I have learned also in a couple of years, I would say. कि पहले मुझे लगता था कि अच्छा फाउंडर्स को हम कंटेंट के साथ हेल्प कर रहे हैं. नो, वी वांट टू हेल्प देम
बिकॉज सी नो फाउंडर वांट टू बी फेमस, मतलब फाउंडर्स आर इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग देयर बिजनेस, ठीक है, उनको ये नहीं चाहिए कि यार मेरे 10,000 फॉलोअर्स हो जाए, मेरे 20,000 फॉलोअर्स हो जाए, दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड बाय दैट। वेराज अगर उनके 500 फॉलोअर्स है बट उनके पास दो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जो कन्वर्ट हो रहे हैं, या फिर उनके को हायरिंग में हेल्प हो रही है, that is their goal, right? So that is where I want to head Cherry Media to now, that we want to be a founder's growth partner, not just a content creation partner. And the vision of the company is that we can help more and more founders. Like, we want to build that trust, because if you are handling a personal profile, right, अगर आप कुछ भी गड़बड़ करते हो, it does more harm to the company than good, right? अगर आप कुछ भी गलत लिखते हो, it does more harm to the company than good. In the era of chat gpt AI, content creation is super easy. So how can we set the content apart, and how can we capture that tone of a founder? मतलब आज हम लोग जितने भी founders के साथ काम कर रहे हैं, आप बोल ही नहीं सकते हो कि मतलब ये सेम एजेंसी के क्लाइंट्स है, बिकॉज हर फाउंडर की वॉइस अलग है, राइट? एवरी फाउंडर हैज अ डिफरेंट वे ऑफ स्पीकिंग. मे बी लविन विल स्पीक लाइक अ specific way, Muskan will speak like a specific way, somebody else will speak like a specific way. So we make sure कि हम लोग उनका टोन कैसे कैप्चर करें, so that if they go somewhere, it should not be like, oh, this person is different on LinkedIn and this person is different on this thing. And the vision is that we become their growth partners, and some agency that they can truly trust, with their own personal branding, and not just something, that they're just pushing out content. We don't want to be that. Yeah. Great, great. So, Muskan, moving on to our last agenda of this podcast, that, मैं अपने viewers को बताना चाहता हूँ कि मुस्कान की कुछ, couple of week back, उनकी एक post थी LinkedIn पे, वो बहुत ज़्यादा viral हुई. I believe उसमें almost 16,000 likes थे और millions of impressions आए LinkedIn पर. So, it was around the corporate myths, if I'm not wrong. So, मुझे उसके बारे में मुस्कान थोड़ा जानना है कि आप अपनी experiences से और अपनी journey से बताइए कि जो आपने फील किया कॉर्पोरेट में, और जो आप यंगस्टर्स को बताना चाहते हैं, हु आर गोइंग टू जो अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड जल्दी से ज्वाइन करने वाले हैं इन रिसेंट ईयर्स, तो उनको आप क्या हार्ड हार्श रियलिटी या हार्श ट्रुथ बताना चाहते हैं? Yeah, of course. Why not? Like, I think, as I told you yesterday also, like, because now I don't think I am going back to corporate anytime soon. So I can definitely talk about. So सारी चीजें mostly लिखी दी थी मैंने, उसका part 2 भी डाला था. Like, if you can just put the link to the description, that would be great. But a couple of things is, for example, कि a lot, like, जब मैंने join करा था, मुझे लगता था कि यार यही है मेरी, like, this is all my life about. मतलब I used to not take my, sometime there were times कि मेरे को घर से कॉल आ रहा है, I was like कि यार मेरे को, like, I have to work. And then uh, slowly and gradually I realized that nothing is super urgent. Like, मतलब sorry, in corporate everything is urgent. तो मतलब अगर आप स्टार्टिंग में, आपको ये पता नहीं होता है, राइट? लाइक स्टार्टिंग में आपको लगता है अच्छा मेरे मैनेजर ने ये बोल दिया है तो अभी तो ये करना ही करना है. यू हैव टू डू योर वर्क, बट यू डू नॉट हैव टू फॉरगेट योर बाउंड्रीज ऑल्सो. अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा भी था, मेरे मैनेजर ने मुझे 6 बजे, इट वॉज 6 o'clock इन ऑन अ फ्राइडे, एंड ही टोल्ड मी दैट ऑन मंडे 10 o'clock I have to present this into a meeting. And I was like, oh shit, now, like, when should I work? Friday is almost over. That means they were saying कि यार तुम Saturday Sunday को भी काम करो. And I did that, and I'm so ashamed of that कि मैंने वो काम किया, right? Whereas I could have straight said no. Like, now when I talk to so many people, they are like, you have to say no to a lot of people, which I learned the hard way. So if you are somebody joining new, you can do that. Then, as I mentioned, that don't overshare your personal information with a lot of people. Like, because I feel like when you go into corporate, let's say आप एक 19-20 year old, or not even 19-20, 21-22 year old के बच्चे हो, ठीक है, बट वहां पे आप जाते हो तो आपको 30 year के लोग, 40 year के लोग, 35, सारे एज ग्रुप के लोग मिलते हैं, ठीक है. अगर आप कॉलेज जाते हो, वहां दोस्त बनाते हो, तो क्या होता है ना कि आपके अराउंड सेम एज के लोग हैं आपकी क्लास में.
19 साल का ही बच्चा बैठा है आपके बगल में, तो आपका दिमाग उतना ही चलता है। बट आप कॉर्पोरेट में जाओगे तो ऐसा नहीं होता है। आपका दिमाग तो इतना सा चल रहा है, पर किसी का इतना ज़्यादा चल रहा है, राइट? तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इनटू व्हाट यू आर स्पीकिंग। यू आर नॉट ओवर शेयरिंग, or you're not speaking things that can backfire you at a later point of time, right? I am not at all saying that don't make friends. Definitely make friends, have good like have good relationship with everybody, but avoid sharing personal information, I would say, because most of the times that will backfire you. And what did I write? Actually, I forgot. No worries, no worries. Yeah, actually there Yeah. are a lot of things. अगर सारी cover करेंगे तो बहुत ज़्यादा time चला जाएगा, तो probably I Yeah. can just say that other things I've mentioned in the LinkedIn post. Definitely. I'll just share the link of that particular post as well. And I'll also share the Insta handle of your Cherry Media agency and Yeah, your LinkedIn profile. और आप मेरे को वो भी जो आप स्टैट्स बता रहे थे ना LinkedIn पर yeah, कन्वर्जन का, आप वो भी मेरे को शेयर कर देना, जिससे थोड़ी क्रेडिबिलिटी और ऑथेंटिसिटी बढ़ती है व्यूअर्स के 100%. मन में. I'll send it to you. या डेफिनेटली. सो इस पर मेरे को बस एक चीज़ और ऐड करनी है, जो मुस्कान ने बताया कि यार कॉर्पोरेट में ना ऐसा वी आर फैमिली टाइप कुछ नहीं होता. ठीक है, एक पर्सनल बाउंड्रीज ड्रॉ करके चलनी Yeah. चाहिए इंसान को. और कलीग्स होते हैं, ठीक है, दे कैन बी गुड कलीग्स, दे कैन बी बैड कलीग्स, बट ऐसा नहीं होगा कि वो फैमिली बना लो. वो टीम है. टीम और फैमिली में फ़र्क होता है. Yeah, सो also one thing I wanted to add, super, super important. So, especially if you are like a women in tech, let's say in engineering, especially, you will not find a lot of similar people in corporate, right? For example, in my team, there were, let's say, like 20 men and just two girls, okay? So I am not saying not to be a feminist or anything, but it does get intimidating, right? For example, I mean, you are in a room full of like 20 girls and just two boys, तो वो थोड़ा सा intimidating हो जाता है. And that is what I also felt initially. So if there's any woman or any girl watching this, if you are into engineering or if you are in a domain जहाँ पे unfortunately the female count is not that much, make sure your voice is also heard and do not be intimidated or do not have that inferiority kind of thing, just because you think that there are a lot of other people, uh, like different people or something like that, and just because somebody is speaking in a louder tone does not make them right. So I felt personally a lot of these things. Initially I was not able to speak because there were like 20 or 22 senior people there, or like so many men in the room, right? So I always used to be like, I'm just sitting and all of it. But then I'm so thankful and so lucky to have like great mentors around me who like told me that you can speak up, and that is gradually how I learned, right? So that was just one important lesson if there's any women in tech watching this. great, great. Where this is going to be as super value addition from your side, Yeah, Muskan. So this was it from my side, and it was a wonderful experience sharing the stage with you and hosting you. Or I'll just take a minute to reiterate all the learnings and all the stuff that we talked about. So sure. यार मुस्कान की जर्नी से हम ये सीख सकते हैं कि लोग ना लाइफ में अगर एक स्टार्टिंग के डेज में 40-50 लाख की जॉब मिल जाती है तो लोग सेटल डाउन हो जाते हैं. अगर 15-20 लाख की जॉब भी मिल जाती है तो भी ईजिली लोग सेटल डाउन हो जाते हैं. लेकिन वो पैशन, वो हंगर हमें एज अ यूथ अपने अंदर नहीं खत्म करनी चाहिए. और बहुत ज़्यादा लोग सोशल मीडिया पर, स्पेशली लिंक्डइन पर, लोग क्रिप कर रहे होते हैं कि यार दे आर अनक्लियर, दे आर इन डायलेमा अबाउट देयर करियर पाथ. तो हम मुस्कान की जर्नी से हम ये सीख सकते हैं कि यार ठीक है, कि बहुत सारे सेक्रीफाइसेस होने करने पड़ते हैं आपको, अगर आपको एक सर्टेन लेवल पर पहुंचना है. और कंपाउंडिंग वाला वो तो मतलब सबसे बड़ी लर्निंग थी जो निकल के आई हमारे इस पॉडकास्ट से, कि यार वो छोटे छोटे एफर्ट्स ना एक दिन एक उस स्टार्टिंग में आपको लग रहा होगा कि यार मैं क्या कर रही हूँ, मैं जॉब कर तो रही हूँ. ये थॉट्स भी आते होंगे कि यार मेरे को तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए मिल रहे हैं ना अकाउंट में, मैं क्यों अपने सैटरडे संडे वेस्ट कर रही हूँ. मेरे साथ वाले, मेरे फ्लैट में मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सारे वीकेंड पर एंजॉय कर रहे हैं. लोग ये भी बोलते हैं गेट गेट अ लाइफ ब्रो. ठीक है, मंडे टू फ्राइडे तो इतना हासिल कर रहे हो, थोड़ी सी पर्सनल लाइफ भी करो, फैमिली के साथ एंजॉय करो, घूमो फिरो दोस्तों के साथ. तो वो सारे सेक्रीफाइसेस जो हमने किए वो एक दिन जरूर दे विल, हार्ड वर्क डज नॉट गो इन वेन, एंड इट डज पे ऑफ
very well. So all the best for your future endeavors, and Cherry Media के लिए best wishes from my side, Muskan. And I would like to request all the viewers watching our video, you should follow Muskan on LinkedIn. She really post a very very decent content, बहुत अच्छा और बहुत insightful content वो share करते हैं LinkedIn पर. और irrespective ज़रूरी नहीं है कि यार आप IT के हो तो ही उन्हें follow कर सकते हो. Irrespective of all the domain, उनकी पोस्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, इंसाइटफुल होती हैं, और अब किसी भी डोमेन के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर है उनकी जर्नी से सीखने के लिए. सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग आउट टाइम एंड टेकिंग आउट टाइम फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल. और हम संडे को पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, सो इट शोज योर ग्रेट, योर डिटर्मिनेशन. सो थैंक यू सो मच, मुस्कान. Thank you so much for inviting to the podcast. I really wish that the audience, your audience, takes like away a lot of insights from this, and I would love to connect with all of you guys who are watching this. Yeah, Yeah, thank you so much. Bye bye. Have a good day. Bye. thank you. Bye bye. Bye.